दोस्तों वेलकम टू लेसन नंबर 90 और वेलकम बैक टू लेसन नंबर 90। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। द लायन एंड द माउस। ए लायन वॉज awakened from sleep by a mouse running over his face. Rising up with anger, he caught the mouse and was about to kill him. Then the mouse interrupted, saying, "If you would only spare my life, I would be sure to repay your kindness." The lion laughed and let him go. It happened shortly after this that the lion was caught by some hunters, who bound him by strong ropes to the ground. The mouse, recognizing the lion's roar, came and knocked the rope with his teeth and set him free. The mouse then told the lion, "You ridiculed the idea that I would ever be able to help you. You didn't expect to receive from me any payment of your favor. Now you know that it is possible for even a mouse to help out a lion." सो ये 90 डे का लेसन रीडिंग कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए वोकैबुलरी। हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब टू सी समथिंग विच इज़ नॉट देयर। वहम होता है, हिंदी का अर्थ सिमिलर वर्ड्स है डे ड्रीम या डेल्यूशन आप बोल सकते हैं। देन आफ्टर देखिए सेकेंड पन। पन का मतलब मेकिंग ए जोक दैट रिफर्स टू द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड। यमक सिमिलर वर्ड है, वर्ड प्ले या जोक आप बोल सकते हैं। सो लेसन 90 आज कंप्लीट होता है। स्पोकन जो डे स्पोकन था 90 डे 90 लेसन का स्पोकन था। सो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बोलना दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सो चलिए रीडिंग में फिर से बता देता हूँ। देखिए लायन एंड माउस, उसके बाद वोकैबुलरी। हम लायन और माउस के स्टोरी आज कंप्लीट किए हैं। सो थैंक यू एंड बाय। मिलेंगे और कुछ नए और मज़ेदार लेके। थैंक यू एंड बाय।